welcome Mr. Aditya Kumar, MD and CEO of Victoria Lifts, a visionary leader in the elevator industry. His dedication has transformed Victoria Lifts into India's fastest growing elevator manufacturer. He coined the term infra travel to redefine how we think about moving people within infrastructure, driven by a desire to see an Indian elevator company reach global prominence. He strives to surpass international standards and elevate the entire industry. His journey of exploration and innovation continues with a clear goal to make elevators not just efficient but exceptional for everyone. Aditya will present a submission on necessity for regular maintenance and modernization. So let's welcome Aditya. Thank you for that wonderful introduction, Akanksha. I myself was flattered on that. I would like to start by also thanking ACE Update and the entire group for hosting such a wonderful event. Indeed, all the topics that are being addressed today by the industry experts are very important for the people to understand. I also believe that the audience that's participating today are mainly from the construction industry. And from their perspective of considering them, I would rather be taking today's, I would be sharing the information in a style which is rather easy for the common person to understand. My colleague, Mr. Ladd, before me, definitely gave a wonderful insight and definitely a positive one, a motivating one, some positive facts around the industry. And to start with, I would like to share that elevators definitely have come a long way now. The first company of which was into the business of manufacturing elevator was Otis, and since then until now, a lot of global players have come in. A lot of R&D has gone, a lot of technology improvements have gone. So yes, the safety of the elevators is definitely improving as we speak also. However, if I talk about the topic that has been assigned to me, which is the importance of maintenance and modernization, let me, in a very short and crisp manner, try to make people understand that what exactly is the necessity about it. You know, apart from utilizing my business language of English, I would also like to explain, if that's okay with you, in my native language, that's Hindi, because most of the people around us are also comfortable and they understand more in Hindi. So this is for the larger crowd, because a lot of people actually travel in elevators. So it's not just about people who are installing the lifts. I believe that through this platform, we should also extend the information that's for people who are traveling in the elevator. Right now, that could be a Zomato delivery boy, or that could be the CEO of a multi-million-dollar company. Right? The stake of life is equal for everyone. That's what I feel. Let me start with this wonderful example that whenever you buy an elevator for your building, for your own utilization, or for the utilization of the people who are occupying your building, let it be of a good verified background company. It's like that कि जब भी आप whenever you look for a son-in-law or a daughter-in-law for your kid, हमेशा बड़े लोग कहते हैं कि भाई परिवार देख के शादी करना. वो परिवार इसलिए बोलते हैं because that's where the real inculcation of culture comes. कि भाई क्या उसके अंदर जो कल्चर है, क्या उसकी आदतें हैं, क्या उसकी अपब्रिंगिंग है, वो परिवार पे बहुत डिपेंड करता है. Elevator में it defines कि what exactly is your manufacturing setup, how much of the investments do go into the research and development of the product, what kind of team is really going behind the operations of the business, and what exactly is the vision of the company to go beyond it, right? So, अगर आपका family background अच्छा है, अगर आपकी organization अच्छी है, so this is a product जो आपके साथ 10 साल, 15 साल, 20 साल तक चलता है, ठीक है? And life को involve करता है, तो हमेशा ऐसी कंपनी को जरूर देखिए जो कि अपने विजन के साथ क्लियर है और कहीं ना कहीं एक ग्लोबल स्टैंडर्ड को फोकस करती है. दैट्स नंबर वन. नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ मेंटेनेंस. आज की तारीख में लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू इन दिस वे. हम सब मल्टीविटामिन्स लेते हैं,
right? We go for our workouts, हम preventive health checkups लेते हैं. Why do we do that? What's the need of putting all that money? We need to know and we understand this fact now कि जितना हम अपने शरीर का, अपनी बॉडी का ध्यान रखेंगे, उतना ही हमारी बॉडी हमारा साथ देगी. That is exactly the way the elevator works. Through regular maintenance, through a proper maintenance, and definitely through an OEM maintenance which knows what the product is, आप अपनी लिफ्ट को हेल्दी रखते हो, उसको अच्छा रखते हो और उसका प्रोडक्ट का पूरा लाइफ साइकिल आप एक्सपेक्ट कर सकते हो. If I further, try to explain the importance of maintenance, I can put it on 4 pillars. 4 चीजें हैं जो कि मेंटेनेंस के लिए बहुत जरूरी है. First and foremost is safety, right? Second is reliability. Third is complying with the regulations, because the latest being Uttar Pradesh, which is now coming up with the Lift Act. ये इसीलिए हो रहा है because now the government is also realizing that vertical transportation काफी बढ़ रहा है, infra travel काफी बढ़ रहा है. So there has to be a governance in this as well. And the last thing is longevity, जो मैंने बोला. अगर मैं सेफ्टी की बात करूं, एक रेगुलर मेंटेनेंस से आप अपने पैसेंजर्स की सेफ्टी देख सकते हो, आप एक्सीडेंट्स प्रिवेंट कर सकते हो, और कोई भी मैल फंक्शनिंग, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, यू कैन टेक केयर ऑफ दैट. बाय रिलायबिलिटी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहती है. ब्रेकडाउन्स अगर हो भी तो बहुत कम होते हैं, टर्न अप टाइम ज्यादा होता है, डाउन टाइम बहुत कम होता है. It really minimizes your downtime, which further ensures into the smooth operation and flexibility at all the time. And why, I just explained कि अगर आप regulations के साथ comply कर रहे हो, whether it's the Bombay Lift Act or it's the IAS or, your state acts, it actually makes you double sure that you are in the legal periphera in the operations and maintenance of your elevator, whether you are the person who's providing the service or you are the person who's taking the service. Both are under some government foundations, and by compliances they only get better. ये सब करने के बाद longevity की बात है. जब आप ये सब करोगे, आपकी मेंटेनेंस टाइम टू टाइम होगी. प्रिवेंटिव मेंटेनेंस आप महीने में एक बार कराओगे, which will be, which will be properly done with the OEM or a company which knows the business well, or professionally. Definitely मैं कहूँगा professionally करने वाले लोग, right? Not the ones जो market में आज की तारीख में बहुत सारे लोग ऐसे हैं. I know India is a very price sensitive or a cost sensitive market, लेकिन जान है तो जहान है. और एलिवेटर के साथ आप रियलाइज नहीं कर रहे हो कि साल के 365 दिन में से 364 दिन अगर लिफ्ट ठीक चली और एक दिन गड़बड़ हो गया, तो आप वहीं पे आपको सारे जितने आप पैसे बचाने की कोशिश कर रहे हो, दे विल बी ऑफ नो यूटिलाइजेशन. उससे ज्यादा शायद आपको हॉस्पिटल का बिल आ जाए. एंड आपके पेरेंट्स, आपके बच्चे, एवरीबडी इज यूटिलाइजिंग दैट एलिवेटर. सो डोंट रिस्क ऑन दैट. जब आप गाड़ी में रिस्क नहीं ले सकते, तो गाड़ी में भी लाइफ इन्वॉल्व है और एलिवेटर में भी लाइफ इन्वॉल्व है. इट्स जस्ट लाइक दैट. सो डेफिनेटली आप ऐसी कंपनी के साथ जाओ जो कि प्रॉपर मेंटेनेंस आपको प्रोवाइड कर रही है, राइट? फॉर मॉडर्नाइजेशन, यस, आई वुड लाइक टू पुट इट दिस वे कि मॉडर्नाइजेशन अपने आप में, it is to further extend the life of your elevator, or to make a fuller utilization of the product through technology advancement. जैसे कि एक बहुत बेसिक एग्जांपल मॉडर्नाइजेशन का होता है कि मैनुअल डोर्स होते थे या इम्परफोरेटेड डोर्स होते थे, उसकी जगह लोग अब ऑटोमेटिक डोर लगा लेते हैं, या कई दफे मोटर के अंदर गेयर से गेयरलेस मोटर कर लेते हैं, रीजनरेटिव ड्राइव्स आती है. सो देयर आर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दैट आर हैपनिंग इन मॉडर्नाइजेशन एज वेल, राइट? इसको इसी तरीके से मानिए, फिर एक एग्जांपल की तरह लूंगा, दैट व्हेन यू grow old, so कई बार you have to go through a knee surgery to avoid all that pain, और अपने आप को further ease के लिए you have to go through that surgery, जहाँ पे आपको एक अच्छा knee replacement चाहिए होता है. मॉडर्नाइजेशन exactly उसी तरीके से है. There are different type of modernizations that go into place, right? And
it helps in अगर मैं इसको भी इस एक तरीके से पॉइंट्स में डिस्क्राइब करूं, सो आपकी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स हैं, आपके एनर्जी एफिशिएंसी है, आपके यूजर एक्सपीरियंस को इम्प्रूव करना है, और सेफ्टी फीचर्स के अंदर भी इसको डेफिनेटली हम पुल अप कर सकते हैं, राइट? सो इफ आई टॉक अबाउट एनर्जी एफिशिएंसी, तो जो भी हमारे नए सिस्टम्स आ रहे हैं, मॉडर्न सिस्टम्स विच आर इन प्लेस, दे आर फार मोर sustainable also, they are environmentally conservational, they reduce operating cost, that's there. User experience इसलिए हो जाता है because aesthetically भी definitely lot of things happen, aesthetic upgrades होते हैं जिनसे आपके जो यूजर एक्सपीरियंस है वो बेटर होता है, राइट क्वालिटी बहुत इंप्रूव हो जाती है। अगर हम स्पीड को चेंज करें, मॉडर्नाइज करें, तो आपका वेटिंग टाइम कम हो जाता है, ऑटोमेटिक डोर्स आर सेफर, एक्सेसिबिलिटी बेटर हो जाती है विद ऑल फर्दर थिंग। सेफ्टी के अंदर अगर हम बात करें तो अर्थक्वेक एंड फायर रिस्पॉन्स सिस्टम इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, that now the elevators also they come with a feature of earthquake and fire response. Fire कुछ लिफ्टें फायरमैन लिफ्ट की तरह भी चल सकती हैं थ्रू मॉडर्नाइजेशन. The feature can be added to the existing elevators and the new elevators as well. So ये सारी चीजें हैं जो मैंने बहुत ही जरूरी, बहुत ही वास्ट टॉपिक को एक बहुत ही कॉमन टर्म की तरह समझाने की कोशिश करी है आपके लिए, आपके ऑडियंसेस के लिए. Bottom line यही कहना चाहूंगा that I have not said anything about my company. I have tried to be very, I would say, modest. Just to finish this line, Victora as a group, so आप इंडिया के अंदर कोई भी गाड़ी चला रहे हो, या अगर आप पोर्शे चला रहे हो, BMW चला रहे हो, मर्सिडीज चला रहे हो, कहीं ना कहीं आप विक्टोरा को यूज कर रहे हो, because since the last 50 years we have been into the business of automotive components, which is our primary phase, and that is where we have learned that what is the importance of quality, right? And today so we are in the business of elevator, which and we're trying to break the glass ceiling. Market का एक perception है कि जहाँ पे Indian companies को लोग शायद whenever they see we struggle a lot, I see that and I'm glad that my fellow participants are from the Indian market as well. So हम लोगों के लिए definitely एक challenge ये होता है that we have to make a mark against the multinational companies. And in Victoria, what we are exactly trying to do is that through our R&D, through our product development, we are very much focused that we not only get into the business of elevator, but we also become the leaders in terms of sustainable, safe, reliable elevators with good maintenance, and then when required, good modernization options. That's all from my side. Thank you so much, Akanksha, for this time and for this opportunity. Thank you so much. Thank you, Aditya, for explaining us it in a very much simpler way. Nobody else would have done that.